Hi everyone, welcome to GRE with Gaurav. In this video, we are going to take passage number 3 from the book RC 99 by Aristotle Prep. Okay, as usual, I would recommend that you pause the video here, go through the passage, read it properly. If you want to time your performance, it would be another good idea to do so. Then use the timestamps that I've put in the description box. Go to the questions, jot down your answers, then come back to this point to check whether your comprehension, to check whether your answers are correct or not. ठीक है, तो चलो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन. ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है जॉनर ऑफ द पैसेज. व्हाट इज द जॉनर ओवर हियर? प्रीटी इंटरेस्टिंग. दिस इज वेरी स्ट्रांगली फॉलोइंग इन द जोन ऑफ पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंसेस हम कह सकेंगे. ठीक है, please pardon my writing, it's apparently is not good today. Okay, it keeps on changing. All right, so genre is political sciences, and a lot of information, a lot of discussion has happened in this 4-5 paragraphs that are given to us. Okay, language जो use की है बहुत strong है. Strong in the sense the author is playing it very front footed. He is not mincing any words. कहीं पर भी कोई euphemism नहीं मिलेगा आपको, but at the same time vocabulary पे heavy नहीं है RC passage. So that is why, unlike other videos, unlike other some passages, I have not put any glossary over here. I think that if you have a fair command on the language, you'll be able to get this. Nonetheless, if you have not understood any word, you can either Google it, or if you want explanation for an entire sentence which I might miss in the discussion, please let me know in the comment section. More than glad to help you out. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. Let's take a look at the first couple of paragraphs. Okay, they are talking in the same vein actually. What is this author saying? He starts off with without any क्या कहेंगे hesitation, he hits the ground running. He says that the media, now media in this sense, you have to understand that this passage seems to have been written before the advent of social media. Maybe the time that this passage was written is possibly जब newspapers में बहुत ज़्यादा power है, maybe even TV media and such, possibly I don't know, maybe they have arrived on the scene or not. But right now here the media is strongly related to the press. So the press means in print न्यूज़पेपर्स. ठीक है, तो व्हाट द ऑथर इज सेइंग ओवर हियर इज कि अमेरिकन मीडिया न्यूज़ वालों को बहुत ज़्यादा ही एक्सेस है गवर्नमेंट के बहुत छोटी छोटी बातों में. द मीडिया डिस्ट्रस्ट द गवर्नमेंट. ओके, तो ऑफ कोर्स जिसको आपको अगर किसी पे डिस्ट्रस्ट है तो एक प्रकार की दुश्मनी टाइप से ही तैयार हो गया. ओके, तो व्हाट इज मीडिया डूइंग हियर? दे हैव अ लॉट ऑफ पावर. दे सीम टू हैव a tacit license to go ahead and reveal almost everything about the government. ठीक है, so what the author says about this is कि यार ये अच्छी बात नहीं है. ठीक है, he calls this कि यार this is very bad. This is harming the society. Rather society से ज़्यादा it is harming the government and its functioning. He has set the agenda very clearly at the start. Okay, media का distrust of the government, and of course in that pursuit they end up leaking, they end up revealing a lot of stuff what the government is doing. So this, according to the author, damages our ability to design and conduct good policy in ways the media can rarely imagine. मतलब author is saying मीडिया को समझ ही नहीं है कि आप भाई जो काम कर रहे हो उसके वजह से सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट काम हैम्पर हो रहा है. ठीक है, this is bad, this is bad. Okay, if you are stopping the government, if you are making the government hesitate in carrying out its job efficiently, properly, so it's not a good thing, right? This is what the author is trying to point out over here. ठीक है, all right. Then in the second paragraph what he is saying कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि whenever these media indulge in actions like leaks में मतलब ऑफिशियली इंफॉर्मेशन बाहर निकली नहीं है, मीडिया ने अपने इंसाइडर न्यूज वगैरह निकाल कर बात पब्लिक में रिलीज कर दी, and the government has not said anything of that sort officially, that can be called as a leak. ठीक है, तो what the author is saying is कि इसके वजह से जो डिस्कशंस चलते हैं लीडर्स लोगों के बीच में, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के बीच में, दोज आर गेटिंग हैम्पर्ड. ठीक है, उनके मन में डर बैठा है कि द फियर दैट दे हैव इज कि भाई हम अगर कुछ भी बात कर ले, भले ही हम ऑफिशियली अभी पब्लिक में जाके अनाउंस नहीं करेंगे, आपसी बातचीत अगर होगी, मे बी आई जस्ट वांट टू डिस्कस वन आइडिया विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, ये भी बात यार बाहर निकल जा रही है मीडिया में और फिर उसके अराउंड बवाल मच रहा है. तो दिस इज सो अनहेल्दी, दिस इज सो अनएक्सपेक्टेड. So this makes many people hesitate. Whatever they might say, it makes many people hesitate, unwilling to speak their minds. And the author says ये बहुत गलत बात है. Okay, क्यों? That is given over here in the third paragraph. He is elaborating कि ऐसा hesitation आना leaders के मन में, officials के मन में, this is bad. Okay, why?
थर्ड पैराग्राफ में जो फर्स्ट सेंटेंस है काफी बड़ा है. दिस इज एक्चुअली अ प्रिटी लॉन्ग रेटोरिक क्वेश्चन. Okay. Now, for people who might not be aware of what rhetoric question is, I would like to give a short explanation. Rhetoric question मतलब वो जो सिर्फ emphasis के लिए पूछा जा रहा है. जवाब expected नहीं है, जवाब पता है सब लोगों को. ठीक है. For example, if let us say you go out with your friend and come out really late at night. ठीक है. तो समझ लो आप रात को 2 बजे आ रहे हो. When your mom and dad insist that you come back home at 11 p.m. So what is going to happen if let us say you come back home at 2 a.m. and if your mom is standing there in the hall and she asks you बेटा टाइम क्या हुआ है. So this is a rhetoric question. Please don't answer that. Okay, जिंदा बचना है तो, otherwise flying chappal received. Okay, so that is a rhetoric question. Answer is known to the mom, answer is known to you as well. It is being asked just to create some strong emphasis. So same thing in the first question over here. Author is saying in the third paragraph कि ये मीडिया के लीक हो रहे हैं, मीडिया के थ्रू मतलब लीक्स आर हैपनिंग. तो उसके वजह से व्हाट हैपेंस इज हाउ इज द गवर्नमेंट कोपिंग अप विद इट. जो लीडर्स के बीच में पॉलिसी डिस्कशन जो होते हैं, ओके, दोज गेट रेस्ट्रिक्टेड टू अ हैंडफुल ऑफ पीपल हु ट्रस्ट ईच अदर. मतलब लेट अस से गवर्नमेंट में कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, या फिर चलो ब्रॉडर स्केल पे पकड़ो, इफ देर आर सम डिस्कशन बिटवीन कंट्री ए एंड कंट्री बी विच आर टू हैपन. बट अब इन लोगों को पता है, दोनों साइड की सरकारों को, दोनों साइड के ऑफिशियल्स को, कि बॉस लीक हो जाएंगे हम जो भी बातचीत करेंगे मीडिया में. सो व्हाट विल हैपन इज मे बी देयर आर 2-3 गाइज हियर एंड देयर आर 2-3 गाइज हियर हु ट्रस्ट ईच अदर, हु नो कि भाई हम 6 लोगों के बीच में कोई मीडिया का खबरी नहीं है. हम जो 6 लोग आपस में बातचीत करेंगे ये हमारे बीच में ही रहने वाली है. So what this will happen is कि these 3 guys will tend to have discussion among themselves only. That's about it. ठीक है. बट ऑथर से कि भाई ऐसी बात नहीं है ना, ऐसा हो सकता है कि बचे और शायद 5 ऑफिशियल्स है यहाँ पे. देर आर मे बी इवन और 5 ऑफिशियल्स ओवर हियर who can take part in this discussions, who can contribute to this policy making, which will lead to a better outcome. लेकिन अब ये सस्पिशन जाग चुका है, एक दूसरे के प्रति इतना डाउट है कि यार तुम में से मीडिया का खबरी कौन है. तो what is this leading to? This is leading to this situation. Limited number of people taking part in discussions and decisions. According to the author, this is not healthy. And he's framing this in a rhetoric question by saying कि ऐसे होने की वजह से should we be content ऐसे इतने limited discussions में. भाई ऐसी बात नहीं है, हमने तो अलाउ करना चाहिए, बेटर रिचर डिस्कशंस होना चाहिए. एंड दिस इज वेयर द ऑथर हैज पुट दिस फॉरवर्ड. शुड वी बी कंटेंट विद दिस, मस्ट वी बी कंटेंट विद दिस सिचुएशन? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट. ऑथर इज सेइंग कि ये जो हुआ है, ये जो रेस्ट्रिक्शन आ चुका है, दिस इज नॉट हेल्दी यार. आई डोंट लाइक इट. व्हाट शुड रादर हैपन अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज कि a larger group should be able to take part in this discussion because the richness and variety of ideas that can come forward, that could be brought forward through a larger group. ठीक है. So once again very important takeaway from the third paragraph, author ने अपना stand clear कर दिया है. He says because of media का over activism, over reach in a way is damaging national international policy discussions. Okay, then what after that rhetoric question, he is saying, he is also discussing this with respect to foreign international discussions also, कि हमारे यूनाइटेड स्टेट्स के जो लीडर्स है, इन लोगों को भी फ्रीली फ्रैंकली पता चलना चाहिए कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है. इफ देर आर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अदर कंट्रीज विच आर हेजिटेंट टू शेयर द ग्राउंड रियलिटी विद यूएस के लीडर्स, तो भाई ये तो नुकसान पहुंच रहा है ना हमें. तो दैट इज व्हाट इज पॉइंटेड आउट इन दिस लास्ट सेंटेंस ऑफ द थर्ड पैराग्राफ. ये वंस अगेन मीडिया लीक्स के वजह से, टाइम एंड अगेन द ऑथर इज एम्फसाइजिंग इस पॉइंट कि देखो कितना डैमेज कर रहा है ये मीडिया के थ्रू जो लीक्स होते हैं. दिस इज सो हार्मफुल फॉर ओवरऑल पॉलिटिकल सेटअप. ठीक है. देन कमिंग टू द फोर्थ पैराग्राफ, अभी यहाँ पे आता है मजा. द ऑथर इज नाउ चेंजिंग थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज डिस्कशन. नाउ ही सेज कि एक जमाना हुआ करता था जब पब्लिक को मीडिया पे भरोसा था कि बॉस देखो sorry. In the fourth paragraph, the author is saying कि एक जमाना था when the public used to trust media, but now the media itself has grown pretty large and powerful. तो अब पब्लिक इनके ऊपर में भी डिस्ट्रस्ट के नजर से देखने लगी है, शक के नजर से देखने लगे. तो व्हाट इज द सिचुएशन नाउ, कि जरूरी नहीं है कि अब मीडिया अगर बात कुछ बोल दे बाहरी दुनिया में, कुछ समझ लो पेपर में पब्लिश हो जाए या शायद न्यूज चैनल्स पे आ जाए,
तो नॉट नेसेसरी दैट द पब्लिक विल एक्सेप्ट इट अनक्वेश्चनिंगली। पब्लिक उसके तरफ भी सवाल उठा के देख सकती है, नजर टेढ़ी करके सोच सकते हैं वो कि भाई ये जो बोल रहा है वो गलत है भी हो सकता है। दैट इज एन इंपॉर्टेंट टेक अवे। फोर्थ पैराग्राफ का टेक अवे इज मीडिया या फिर पब्लिक, लेट मी फ्रेम इट इन एन easier manner, public also, distrust would be a wrong word, doubts media now. Okay, public also doubts media now. Sometimes it might accept what the media is saying, but other times it is going to look at it with a suspicious mind, with a doubtful mind. That is a takeaway from fourth para. Fifth paragraph is where the actual fun lies. Now the author is saying कि अच्छा चलो, मीडिया के पास में बहुत पावर है ना, लीक्स बताते हैं, अंदर की बातें रिवील करते हैं, एंड व्हेन डूइंग सो व्हाट डू दिस गाइस आर ट्रम्पिंग अबाउट, व्हाट आर दिस गाइस टॉकिंग अबाउट, अरे नहीं नहीं हम तो पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, पब्लिक को तो राइट टू नो है। हु इज रिमाइंडेड ऑफ Arnab Goswami shouting on national television, the nation wants to know। ठीक है, तो author is saying the media is going about under this excuse कि नहीं नहीं हम तो पब्लिक सेवा कर रहे हैं, हम तो अंदर की बातें निकाल के जनता में बताते हैं। तो author से जरूरी नहीं है कि आप पब्लिक की सेवा में कर रहे हो और आप बहुत इंडिपेंडेंट हीरो आप, नो एब्सोल्युटली नॉट। rather it is very likely that you guys media persons, you are nothing but puppets in the power game, you are being manipulated by people in power, by people in the political circles। how? क्योंकि आपको जो ये अंदर की खबरें मिलती है कभी कभी, द लीकर अंदर की बातें जो आपको आके बता रहा है, what is he guys doing? Either he is planting information to influence policy, okay, या फिर it is possible कि he is using, in the second instance he is using the media as a stage for his preferred politics। इन अ वे इसका मतलब ये है कि जो मीडिया को खबरें पहुंचा रहा है खुद की, दैट पर्सन इज फुलफिलिंग हिज ओन एजेंडाज थ्रू द मीडिया। ठीक है, द मीडिया इज नॉट सम गॉड लेवल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी डूइंग सम मैसिव गुड फॉर द सोसाइटी, ना जी ना। ओके, सो थ्रू दिस ऑथर इज सेइंग कि some journalists think that they are doing the work, but in fact boss, laughable, you are nothing but instruments of the process, not the prime movers। मतलब तुम नहीं है जो इतना सब हिला रहे हो, समाज के अंदर में तहलका क्रिएट कर रहे हो। नो, यू आर जस्ट पपेट्स इन द गेम, somebody else is moving the strings, godfather light। Okay, so now closing remarks coming in from the author, very very important over here, the media must be held accountable फॉर देयर एक्टिविटीज। अंधाधुन ये जो काम करते हैं बिना किसी को जवाब दिए, बिना किसी के प्रति अकाउंटेबल, दिस इज वेरी रॉन्ग। द मीडिया मस्ट बी फोर्स्ड टू अर्न पब्लिक का ट्रस्ट। ठीक है, फेयर इनफ। So let me round off the narrative of the entire passage very quickly, then we'll go to the questions। In the first couple of paragraphs, author is saying leaks through media, he calls them bad, he calls them dangerous, he calls them something that is not ideal, okay, causing damage to the government, causing damage to any good task that the government could do। Then in the third paragraph he is mentioning it limits the circle of what? Circle of officials, circle of people who can come together, discuss things, and maybe come out with good, rich policies. All right. Then in the fourth paragraph, he is mentioning the public also doubts the media now. And in the last paragraph, I have mislabeled the numbers actually. In the last paragraph, what is the author saying? He is saying that media is a puppet. At least sometimes, not always, but yes. And I have made a mess of the screen actually. Really sorry for that. Let me clear. Okay. All right. So this is how the layout, this is how the narrative of the uh, passage has happened। ठीक है, तो before we go to the questions, I would have to erase the part on the screen, right bottom wala। So if you want, please pause the video here, jot this major points down so that it will help our discussion up ahead in the questions। Okay, so I'm clearing up the screen now। Still, if any doubts left in your mind, let me know in the comment section, more than glad to help you out। And if the narrative of the passage was straightforward, if you understood it well, so very good news, because the bad news is that the questions in this case are not good। ठीक है, आई डोंट नो वेदर यू आर इन माई टीम और नॉट, बट
Coming to the question, my entire problem with the questions is the way they are worded, the options specifically not really good. क्यों? तो देखते हैं, पहले दो क्वेश्चन काफी दिक्कत वाले हैं, थर्ड एंड फोर्थ तो भी थोड़े सीधे सरल है। चलो अभी क्या आता है, पहला क्वेश्चन, कमिंग टू इट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड द ऑथर मोस्ट लाइकली अग्री विद। ठीक है, ऑलराइट, तो देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन सी जाएगा। व्हाट डज ऑप्शन सी से? द फ्यूअर द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन पॉलिसी डिस्कशंस द बेटर। in the third paragraph right on the screen that you can see, as I discussed about the rhetoric question वाला part, author recommends कि नहीं, ये मीडिया के डर से नुकसान हो रहा है, the group of circle which people coming together deciding discussing, ये बढ़ना चाहिए, that is how richness of ideas is going to come through। कम जनता बैठेगी, नुकसान है। so C is not something author agrees with, he disagrees with this, उसका opposite मानता है author। ठीक है। D, leaders give up their right to privacy when they are elected, this is also completely bad, completely wrong। author recommends कि मीडिया की नजर से थोड़ा दूर होना चाहिए, there should be at least some kind of forum, some kind of group of leaders that can come together without the fear of media leaks happening। ठीक है, he is strongly against media leaks happening left, right and center every time under the guise of public's right to know, he is disapproval of that। so D also gets kicked out। now coming to the rest of the options। ठीक है, now if you're somebody used to reading the option very very finely ना, जहाँ एक एक वर्ड आपको डैमेज करता है, छोटे छोटे वर्ड्स, एक एक छोटे से छोटा वर्ड, टेंस, क्वालिफायर, क्वांटिफायर भी बात बदलते हैं, तो if you are somebody like that, then option E actually, if you think about it, is something that the author would agree with। क्यों? क्योंकि क्या बोला है, द मीडिया इज नॉट अकाउंटेबल टू द पब्लिक। इस मतलब अभी, आज के तारीख में, और बिल्कुल नहीं है ना अकाउंटेबल, तभी तो जाकर ऑथर इज रिकमेंडिंग कि अरे मीडिया को अकाउंटेबल बनाओ। ओके, तो बनाओ कब हो सकता है? व्हेन द एक्चुअली मीडिया इज नॉट अकाउंटेबल एज ऑफ दिस मोमेंट टू द पब्लिक। गॉट इट? तो अगर उस एंगल से हम सोचे जाए तो ऑप्शन ई शुड बिकम द आंसर, है ना? बट डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, आई विल टेल यू। अगर इसको एकदम ही परफेक्ट बनाना है, चलो अभी आपको अगर डाउट आ रहा हो इज के ऊपर में, तो आइडियली स्पीकिंग व्हाट वुड बी अ वेरी गुड वे टू करेक्ट दिस इज टू राइट द मीडिया शुड बी मेड अकाउंटेबल टू द पब्लिक। ओके, इस तरह लिखा होता तो डेफिनेटली ऑथर वुड हैव अग्रीड विद इट, इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द पैसेज। बट कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा इन्फरेंस अप्लाई करके इस पर से ये निष्कर्ष निकाला है कि नहीं है ना आज की तारीख में अकाउंटेबल, तभी तो आप बोल रहे हो कि बनाओ ऐसे। बट एनीवे, इट इज नॉट द आंसर एक्चुअली, ऑफिशियली एट लीस्ट। नाउ कम एंड एनालाइज ऑप्शन ए एंड बी। व्हाट डज ऑप्शन ए टेल अस? फीडिंग द पब्लिक मिस इन्फॉर्मेशन इज ओके, वारंटेड मतलब चलता है, रादर इवन नेसेसरी, इट इज ओके टू गिव पब्लिक मिस इन्फॉर्मेशन इन सर्टन सिचुएशंस। इफ यू थिंक अबाउट इट, ओके, व्हाट द ऑथर इज रिकमेंडिंग कि हर बात लीक नहीं होना चाहिए मीडिया के थ्रू समाज में, कॉमन पब्लिक में। लीडर्स को इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा तो भी प्राइवेसी की जरूरत होती है टू एंश्योर सम डिस्कशंस हैपन प्रॉपरली। बट डू यू थिंक दिस अमाउंट्स टू giving bad, giving wrong, giving false information to the public? Look, it is one thing to keep certain things secret from the public, okay, but going and saying कि नहीं नहीं, information, misinformation means झूठी बातें। if governments are deciding x, नहीं नहीं opposite of x बता दो जाके पब्लिक में, उनको थोड़ा सा बहका दो, ये बात नहीं है ना। if x is being discussed and if they want to keep it secret, so they can keep their mouth shut, say nothing about it, but that doesn't amount to going out and simply saying opposite of x in the society। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये वर्ड से बड़ी दिक्कत गई, आई एम स्टिल नॉट सोल्ड ऑन दिस। ऑप्शन बी को अगर हम देखेंगे, the public has a right to know the real state of foreign affairs, now this seems pretty wholesome, but once again it is not clear whether the author will agree with it or not। ठीक है, मीडिया बोलती है ऑप्शन बी बार 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 कि नहीं, नेशन वांट्स टू नो, पब्लिक वांट्स टू नो। अभी वेदर द ऑथर अग्रीज विद दिस थिंग कि एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स कितना बताना है पब्लिक को, कितना विथहोल्ड करना है या झूठ बोलना है बाहर जाके, तो उसके अराउंड आई डोंट थिंक द पैसेज गिव्स अस अ लॉट ऑफ क्लैरिटी रिगार्डिंग इट। व्हाट द ऑथर इज स्टेडफास्टली अगेंस्ट इज द सिचुएशन कि बेमतलब का मीडिया के थ्रू अंधाधुंध लीक होते जा रही है करीब करीब हर बात आउट देयर, which is making the leaders hesitate and all that stuff। तो
If you look at option A and B closely, they are opposite of each other. Okay, वन इज सेइंग नहीं पब्लिक को गलत बात पहुंचने दो, बी सेइंग नहीं नहीं सच्ची बात ही पहुंचना चाहिए, हक है पब्लिक का। तो भाई ए और बी अपोजिट है, तो ऑथर दो में से एक साइड तो रहेगा ना। यू कैन नॉट हैव अ सिचुएशन वेयर टू थिंग्स आर कंप्लीटली एक्सट्रीम ऑफ ईच अदर रिगार्डिंग द टॉपिक दैट इज बीइंग डिस्कस्ड। ओके, ऐसा भी नहीं है दैट ऑप्शन ए एंड बी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीटली एलियन टॉपिक जिससे ऑथर का लेन देन नहीं है। इट इज वेरी मच इन लाइन विद व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द पैसेज। तो ऑथर विल लाई आइदर विद ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी ना, दो में से एक होना चाहिए। एंड ऑन द अदर हैंड यू ऑल्सो सी, इफ यू आर लाइक माई थॉट प्रोसेस, तो ऑप्शन ई ऑल्सो मेक्स सेंस। तो this question actually damaged it. Okay, and turns out option कौन सा, option A is the right answer. Now I cannot shove it down your throat because I am not convinced about this option. The reasoning given is simply this कि भाई author does not like everything going out to the public through the media, इसलिए कभी कभी अगर झूठी बात भी पहुंचानी पड़ सके to shut the media down, to make them shut up and have actual genuine good stuff going on behind the scenes, इसलिए option A is something author would agree with. I thought this is a bit of a stretch, bit of क्या काफी stretch लगा मुझे, इसलिए what I did was I did not attempt the question keeping in mind exam वाला mentality. I solve passages with respect to cat mentality where we have negative marking in place, also limited time. So I tried to handle options A, B, and E, tried to reason through and find, sort out any discrepancies if I could. I could not do that, and I left the question actually, attempting it from an aspirant's mindset. But yes, official answer if you're looking for it, option A. And I'm really sorry, I cannot sell it to you. I cannot justify it before you anyhow. Okay? Same experience actually we are going to have in option, sorry, question 2 as well. Okay, question 2 पे आते हैं. This is, pardon me for it, very horribly made question. Okay, बिल्कुल ठीक से नहीं बनाया है, और ठीक है, let's see. क्या दिया गया है? Implicit in the author's argument what? Because of leaks डिस्कशन बहुत लिमिटेड हो रहे हैं, unreliable and limited discussions are happening with foreign leaders. So let's plot it down. What the author has built is a very clear cut causal link, because therefore वाला setup है, because media leaks, because these exist, causal link built है, therefore limited discussions. Okay, and implicit in the author's argument, what does this mean? It is asking us for assumptions. Okay, तो अभी अगर इस क्वेश्चन को आपको यू नो टेक्निकली अगर टैकल करना है, तो यू नीड टू गो थ्रू critical reasoning का theory of assumption, how assumptions are determined through a set of given options. We deploy what is known as something like a negation test. अब अगर मैं negation test यहाँ पे आपको explain करने जाऊँ, अगर मैं apply भी करूँ यहाँ पर on all these 5 options, तो ये खुद में एक क्वेश्चन हमारा half an hour ले लेगा. तो and I also don't know you as the viewer, are you aware of what the concept of negation test is? ठीक है, so I'll not go down by that way. I'll try to give my reasoning before you over here. Once again, my answer, my approach is not matching with the official solution. So going by my thought process first, what the other has said over here is कि because of media leaks, limited discussions are happening. Okay, तो इस बात में क्या छुपी गई बात है? What is implicit? Implicit मतलब something that the author has not said directly before us, but उसके मन में वो बिल्कुल बिल्कुल बैठी है, he believes it to be true, और उसके दम पे उसने ये बात हमें बोल दी. So you have to figure out what is there in the author's heart which he has not spoken out directly. Okay, तो एक एक करके ऑप्शंस को उड़ाना चालू करते हैं. लेट्स सी. सबसे पहले एक्सट्रीम ऑप्शन जाता है आउट ऑफ द गेम, ऑप्शन ई. इट इज बेस्ट टू कीप द मीडिया इन द डार्क. दिस इज वे टू एक्सट्रीम. ओके, इट सेज कि भाई मीडिया को हर बार ही आप गुमराह रखो, हर बार ही आप भुलावे में रखो, इनको कुछ नहीं बताना, कुछ भी नहीं बताना. दिस इज टू मच. ओके, the focus of the passage is with specifically with respect to policy discussions happening between leaders in a certain privacy वाला माहौल. ओके, ऑप्शन ई से नहीं है, इनको बाहर ही रखना है, हमेशा बाहर रखो. नॉट कूल. वे टू जनरलाइजिंग.
nowhere implied by the author. ठीक है, फिर आते हैं ऑप्शन ए विच इज गोइंग ऑफ ऑन अ कंप्लीटली डिफरेंट जोन. इट सेज इट स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट इमोरलिटी इमोरलिटी की तरफ से कि भरोसा तोड़ रहे हैं मीडिया वाले व्हेन दे डू दिस लीक्स. तो ये भरोसा तोड़ना इज समथिंग इमोरल और ये दिल में है ऑथर के बाद, इसलिए वो बोलता है कि लीक्स बहुत खराब चीज है, लीक्स की वजह से डिस्कशन लिमिटेड हो रहे हैं. No angle of morality comes into play. Okay, so option A also has to be said bye bye. Okay. B, leaks have occurred throughout the history of politics. ये भी तो हद के बाहर जा रहा है. Throughout the history of politics. Now politics goes back like what boss 2000 3000 years ago minimum. Okay. जब से civilized societies have come into being, if we go back to Greek democracy and all, तो option B saying leaks तब से होते आ रहे हैं. Whether those are happening, those were happening or not, I have no idea. The average reader has no idea about that कि whether leaks are a modern phenomena या फिर वो बरसों से होते ही आ रहे. So B is also completely out of scope, does not fall in the realm of discussion here. Okay, अब बचते हैं C और D. So coming to the argument once again, what is happening over here is author has laid a clear-cut blame on media for this limited discussions. कि ये है ना बॉस, ये मीडिया लीक कर रही है ना, इसके वजह से हमारे लीडर बेचारे डर के चुपचाप में कम बात करते हैं एक दूसरे से. What does this imply? If you think a little bit, it can be said कि the author is trying to hint at this situation कि अगर ये चीज पे रोक लग जाए तो बल्ले बल्ले डिस्कशंस अच्छे से होंगे. ओके, ये तो मीडिया के डर के वजह से दबे हुए लोग. तो फ्रॉम दैट व्हाट वी कैन से इज पोटेंशियली नॉट विद अ लॉट ऑफ गारंटी बट पोटेंशियली कि शायद अगर एक जमाना था जब मीडिया लीक्स वर नॉट एग्जिस्टेंट, तो इट इज पॉसिबल कि लीडर्स ड्यूरिंग दोस टाइम हैड रियली ओपन हार्टेड कॉन्वर्सेशंस विद ईच अदर without this sword dangling over their heads. This was my thought process, and based on that I would like to go with option C actually. Okay, कि फॉरेन एंड यूएस लीडर डिस्कस पॉलिसी विदाउट इनिबिशन. इनिबिशन मतलब हेजिटेशन, झिझकना. ओके, कि बिना डरे बिना हेजिटेट किए ये लोग करते थे पहले डिस्कशन बिफोर द राइज ऑफ मास मीडिया. तो व्हाई? बिकॉज द ऑथर इज क्लियर कट laying the blame of limited discussion on media leaks. So it's a situation कि भाई मीडिया लीक नहीं थे तब होते होंगे शायद अच्छे से डिस्कशन. But as luck would have it, official answer given to us is option D. Leaders fear the public would react negatively if it knew the real state of affairs. I have no idea, and I have no way of justifying this before you, because once again, pardon from my end, sorry, I cannot understand this option at all, and I have also have no idea how it can be justified. ठीक है. Assumption questions, as I mentioned, they can be solved using the negation test. If you can do it, try applying negation test as well. When I did it, so according to me, negated of option D did not end up killing this argument. ठीक है. Rather, in my opinion, when I negated option C, so it ended up damaging this argument heavily. कि लीक्स मीडिया रहे या ना रहे, हमेशा ही हेजिटेशन रहता ही था पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में. So if that is the case, how the hell can you blame media? That was my thought process, and based on that, I still believe option C should be the answer. But ठीक है, I don't want to go about bitching regarding the official solution. It would be case of sour grapes. So I've given you my thought process. I've given you my explanation. It's up to you. Which one would you go ahead with? Okay, so as you can see, if I were to be given a free reign with this passage ke question without the threat of negative marking, it's very clear that I would have gotten two questions wrong over here, which is not a good thing given that I am a VRC tutor. But ठीक है, goes on to show that सभी से गलती हो सकती है. All right, let's go take a look at the next question now. What is the main idea of the passage? चलो at least ये तो decent question है. ठीक है, but इधर भी मुझे दिक्कत है. Okay, my problem with this passage is never ending. ठीक. Option A, main idea. Once again, I would like to emphasize broad idea, something that should cover the scope of the entire thing. You cannot stick to just second para and say, अरे ये बात second para में की है, बस हो गया ये answer. If that topic, if that mention is not present at all in the rest of the passage, then it is a very bad candidate for the answer. ठीक है, very basic elimination process. Option A, to argue that the media is acting against national interest. Now keep in mind the national interest
way too broad a discussion. Okay, national interest can be with respect to defense, security, policy, diplomacy, you name it, food, whatever. Okay, the scope of the passage is with respect to only and only foreign policy discussion. Case close. ठीक है, तो इतने ब्रॉड इतने जनरल टर्म नहीं फेंके जा सकते मेन आइडिया क्वेश्चन में, दैट टू विद दिस प्लूरल. ओके, so it is heavily generalizing. Option A out. Okay. B. To convince us that journalists are attempting to enhance their own prestige, nowhere given at all. Okay. कि कोई एक जर्नलिस्ट को खुद की प्रेस्टीज बढ़ाने का लगी रहती है, nowhere in the passage, throughout the passage ऐसी बात की नहीं है. Minor mention है over here. Let me highlight that in a different color. Let's use blue. Enhancing the prestige of a journalist. Okay. और ये प्रेस्टीज भी कोई जर्नलिस्ट खुद के हाथ से नहीं कर रहा है डायरेक्टली. सम पावर गाय इज हेल्पिंग one journalist or helping a particular journalist do that through the medium of his leaks. So this is once again not the primary focus of the passage. If you see, it does not find even a slight mention in the first 4 paragraphs. So how can it be the answer out? ठीक है. Option C. To discuss the negative effect that media leaks have on foreign policy and also on the media's credibility. Amazing question. Sorry, amazing option. Very well worded, very well worded. Let's hold it for now. We will reject it only if we find a better candidate. D. To criticize politicians for being dishonest in public. Politicians को दूर दूर तक के passage में कहीं पर भी criticize नहीं किया है. Literally not a single criticism is leveled against any politician. ठीक है, गालियां दी गई है तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया को दी गई है पूरे पैसेज में. सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो आउट ऑफ द गेम. ई इज एक्चुअली अ गुड ऑप्शन to suggest that the media needs to be regulated more strongly and effectively. Now, if you go to the official solution, official explanation, वहां पर these guys have said कि कहीं पर भी रेगुलेशन की तो बात हुई नहीं है, तो ये तो बड़ी गलत बात है, इसलिए ऑप्शन ई को तुरंत हम रिजेक्ट कर देंगे. My thought process is different. I believe if you take into account the last sentence properly, तो है जी, legit है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो. This sentence is actually right in my opinion, because this is how the narrative of the entire passage is taking shape. That the author is trying to convince the reader about how badly these leaks are damaging society, not society, sorry, international policy discussion, also damaging media credibility. So this is the massive problem that we have on hand. What is the solution to the problem? Solution is make them accountable for their activities, make them, force them to earn public trust. So this is not out of, you know, क्या कहेंगे, इतना रिजेक्ट नहीं कर सकते इतना इजीली इसको. ऑप्शन सी एंड ई हैव टू बी वेड अगेंस्ट ईच अदर very carefully with a lot of thought. Okay, only after doing a second or third level of thinking can we arrive at a situation कि चलो यार, मतलब जो सजेशन है मीडिया वाला, this finds only a very nominal mention over here. It's just the last sentence and then the passage stops abruptly. Elaboration नहीं हुआ है उस चीज का. So because of that, let's go and select option C actually as the answer. Now that is also the official explanation, official answer also as well. I don't have a problem with it. Finally, after two bad questions, my thought process, sorry, my answer, my favorite option is matching with that of the official solution as well. But once again, coming to the thought process, I don't think option E can be rejected so blatantly. For me, the option is true as far as the last sentence is concerned. I am letting go of option E only because a better option is present in the form of option C, the third. ठीक है, तो चलो, once again, I have no idea whether you agree with me or not, but my job is to be honest in front of you and help you figure out the thought process when it comes to tackling RC passages. ठीक है, I have no shame in admitting even if I, let us say, get 0 on 4 in some RC passage someday. Okay, चलता है, कोई बात नहीं. Fourth, based on the passage, when the media now challenge the actions of a public official. अच्छा, अगर सरकार और मीडिया के बीच में भिड़ंत हो रही है तो पब्लिक assumes what? Okay, और कब? आज, आज की तारीख में. Take a look at this. This is a present tense. Okay, और आज की पोजीशन क्या है? आज की पोजीशन given to us in the fourth paragraph कि public doubts the media. तो ऐसा हो सकता है कि पब्लिक इज गोइंग टू टेक अ लुक एट
the media with suspicion. Hey, possible. All right. So कौन सा आंसर होगा यहाँ पे? आंसर ऑप्शन सी. फाइनली अ वेरी इजी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कमिंग अवे. पहले 3 क्वेश्चन ने तो बहुत त्रास दिया, थोड़ा सा मुझे तो रुला भी दिया फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में, बट ठीक है, कोई बात नहीं. ऑप्शन सी इज एक्चुअली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. द मीडिया मे बी रॉन्ग, ये पब्लिक अज्यूम कर लेती है आज की तारीख में. ओके, so with that all the 4 questions are done. If you have any problem with any of the questions, drop a comment, let me know. Thanks a lot for watching. If you like the content, please like, share, and subscribe. Also, I conduct batches for CAT and OMET. If you would like to know more about the batches, the schedule, the details, please reach out to me on this mobile number or on this mail ID. I'm more than willing to share the details with you. You can go through all my other videos. Please check the channel. Please go to the other videos. You can also go through the playlist. I've made different playlists, keeping in mind the different the different videos that I've made. All right. Thanks once again for watching, and I'll see you in the next video. Tada, bye bye, and take care.